Hello everyone, this is CS Samiksha Sethia and this is another very important video for all those students who are going to appear for the January 21 examinations or May 21, November 21 examinations of the CA Intermediate new syllabus, and also for students who have appeared for the November 20 examinations. As you can see, आज की वीडियो में अपने लोग डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे the paper for your economics for finance, that is paper 8B of your CA Intermediate for the November 20 examinations which had come. तो मैंने यहाँ पे एक डिटेल्ड एनालिसिस किया है, जैसे कि मैंने पहले ऑडिट के पेपर का एनालिसिस करके आपके साथ शेयर किया, उसी तरह से ये इकोनॉमिक्स फॉर फिनेंस जो पेपर 8B है, रिमेंबर ओनली वी आर डिस्कसिंग द सेक्शन बी ऑफ योर पेपर नंबर 8, राइट। अगर आपने ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, डू गो एंड वॉच दैट। उसमें हमने क्वेश्चन वाइज एनालिसिस किया है, ऑल्सो मैंने चैप्टर वाइज वेटेज भी आपको बताया है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए। सिमिलरली ये भी फाइल आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डिटेल्ड क्वेश्चन वाइज एनालिसिस किया है, एंड देयर आफ्टर व्हाट आई वुड लाइक टू फोकस ऑन इज द चैप्टर वाइज वेटेज। यू कैन सी किनेशियन थ्योरी से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आए, मनी सप्लाई मार्केट फेलियर से भी 7 मार्क्स के क्वेश्चंस, एज इन अलग अलग पार्ट्स को इंक्लूड करके टोटल द वेटेज वाज ऑफ 7 मार्क्स। द इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई नीड टू हाईलाइट हियर इज यू कैन सी आउट ऑफ 14 चैप्टर्स इन योर बुक, 13 चैप्टर्स हैव बीन कवर्ड इन योर पेपर। ये पैटर्न इंस्टीट्यूट हमेशा EFF में फॉलो करता है, सारे चैप्टर्स को ऑलमोस्ट कोशिश करता है टच करने की। यहाँ पे भी सिर्फ आपके फिस्कल फंक्शन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, बाद बाकी सारे ही चैप्टर्स कवर किए गए हैं। सो व्हाट इज द लेसन दैट वी आर लर्निंग हियर? नो सिलेक्टिव स्टडी टू बी डन. So I will give this file in the description box below. You can go and download it if you require it. और हम लोग डिस्कस करते हैं अभी हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर. So as you can see, this is section B where question number 7 is compulsory, and then we have to answer any 3 from the rest. Total marks which we need to attempt is 40. पहला क्वेश्चन देखो, आई विल नॉट बी डिस्कसिंग इन टू वेरी डिटेल, दिस इज अ शॉर्ट वीडियो जिससे आपको ये समझ आ पाए किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, हाउ डू वी आइडेंटिफाई व्हाट वी नीड टू राइट, एंड ऑफ कोर्स मैं ये भी आपको बताऊंगी क्या इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी, द कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेप्रिसिएशन एक कॉन्सेप्ट है विच डिस्टिंग्विशेस एनी एग्रीगेट विच इज कैलकुलेटेड एट ग्रॉस अमाउंट and that aggregate, the same aggregate being calculated at the net amount. जैसे GDP और NDP में क्या डिफरेंस हुआ? Only depreciation. When we calculate any aggregate at the gross amount, हम लोग उसमें depreciation और so called capital consumption allowance को include करते हैं, और net में हम लोग उसको exclude करते हैं. In any aggregate which is calculated at the net value, we do not include depreciation. Right, so here we are given the data is GDP at MP, net factor income from abroad which is a negative figure, aggregate amount of indirect taxes, then we have subsidies, and finally we have national income which is net national product at factor cost. Very easy question, आपको बस फॉर्मूला ध्यान में रखना है, फॉर्मूला भी अगर आपको लॉजिक पता है तो you can definitely attempt it. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अगर हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस से निकालना हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट. What is the difference between market price and factor cost? It is net indirect taxes, which means indirect taxes minus subsidies. Factor cost के अंदर IDT included नहीं होता है, तो अगर मुझे MP से FC में आना होगा, मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज का इंपैक्ट लिया हुआ है तो मुझे उसको डिडक्ट करना पड़ेगा. सो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस minus subsidies, matlab this is the net indirect taxes. Clear? So you can also write it as minus indirect taxes plus subsidies. Clear? Okay, now I need to convert domestic figure to national. Domestic में हम लोग कौन से इनकम को इंक्लूड करते हैं? इनकम विच इज विद इन द नेशनल बाउंड्रीज. मैंने क्लास में क्या बताया आपको? इनकम विच इज अर्न्ड भारत में, बट नेशनल क्या होता है? भारतीय का इनकम, भारतीय लोगों का इनकम विच ऑल्सो इंक्लूड्स NFIA. सो हियर वील ऐड NFIA, एंड फाइनली मुझे ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है. ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन घुसा हुआ है, उसको निकालना है, सो माइनस डेप्रिसिएशन, एंड देन यू पुट ऑल द फिगर्स इनटू प्लेस एंड बैक कैलकुलेशन करके आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लीजिए. Perfect, very easy question. Next question, discuss the guiding principle of WTO in relation to trade without discrimination. So ये आपका question ट्रेड नेगोशिएशन चैप्टर से है जो काफ़ी बच्चे छोड़ के जाते हैं एग्जाम में, बट बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये.
Trade without discrimination is basically the most favored nation concept, wherein the World Trade Organization is emphasizing that a nation should not discriminate between the member WTO nation. जिस तरह से a nation treats its own products and services, similarly it should treat give the same treatment to the goods and services which are imported from the outside nations, or which are exported to the outside world, right? So it is trade without discrimination. That means you have to give identical treatment to the other nations, just like you are giving treatment to your own national products and services. Next question. Money performs many functions in an economy. Explain those functions briefly. So there are three functions of money. Can you recall three functions of money? Money used as a medium of exchange, money used as a medium of exchange, money used as a store of value, and money as a standard of deferred payment. And then you need to write a short explanation for all these functions. Next question देखो. Describe the characteristics of public goods. Public goods are those goods जो कि meant है for mass consumption. They are non-excludable, non-rival. ठीक है, they are characterized by collective consumption. No additional cost is required in order to provide another unit of the public good to an additional person, and these are indivisible. Can you give some examples of public goods? Ma'am, highways, roads, bridges. These are examples of public goods which are non-rival and non-excludable. Okay, just in case you have confusion in any of the concepts that we are discussing, or any of the concepts in your economics curriculum, मैंने एक मैराथन वीडियो डाल के रखी है, ठीक है, हमारे SJC इंस्टीट्यूट के चैनल पे. I'll share the link in the description box. If you have any confusion in any of the concepts, you can go and watch it in that video. ये वीडियो एक simple discussion है on the question paper, so we are not going into detailed concepts because I want to keep it short एंड रेलेवेंट. अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो आप उस वीडियो में जाके समझ सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट में जाके अगर आप फुल कोर्स परचेज करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन इकोनॉमी. कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन वेयर C इज इक्वल टू 200 plus 0.6 YD. Okay, government spending, investment, tax, transfer payment is given, exports and imports. Y is the national income and YD is the personal disposable income. ठीक है, यहाँ पे आपको पता है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ये केनेशियन थ्योरी से है, where we need to determine the equilibrium level of national income. How do we do that? Y is equal to C plus I plus G plus X minus M. We have everything here, only consumption function के अंदर यहाँ YD दिया है, so you need to replace YD in terms of Y. You need to express YD in terms of Y. So personal disposable income क्या होता है? National income. ठीक है, personal disposable income is equal to national income plus the transfer payments minus tax. Okay, plus the transfer payments minus tax, because हमारी national income के अंदर जो personal taxes है वो included है and transfer payments included नहीं है, so we adjust it accordingly and you place all the relevant equations and then find out Y. उसके बाद जो y आएगा उसके हिसाब से आपको नेट एक्सपोर्ट्स कंप्यूट करना है. व्हाट आर नेट एक्सपोर्ट्स? x माइनस m, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स. सो एक्सपोर्ट्स में यहाँ पे देखो 0.2y है ना, तो y के जगह जो भी आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आएगा विल सब्स्टिट्यूट इट. एंड फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट कंजम्पशन एट द इक्विलिब्रियम लेवल. सो फर्स्ट वी नीड टू कंप्यूट YD में यहाँ पे आप y को प्लेस करोगे, टैक्स, ट्रांसफर पेमेंट, सो वेरेवर y इज देयर यू सब्स्टिट्यूट इट विद द equilibrium output and then we compute the consumption level. Right, next question देखो. Discuss the fiscal policy measures which are useful for reduction in inequalities of income and wealth. See, we don't have to mention only fiscal policies, but those fiscal policy which will bridge the gap between the rich and the poor. ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी policies हो सकती है मैम? Progressive direct tax system. That means people who are earning higher income need to pay higher amount of taxes. जिनकी कम income है, lower income groups need to pay lower amount of income taxes. Similarly, second fiscal policy measure can be a differential goods and service tax rate system, a differential indirect tax system, wherein we impose higher taxes on the luxury items and lower indirect taxes on necessity items.
Clear? Necessary goods and services. Next fiscal policy measure for bridging the inequalities can be welfare programs. That means government should spend their funds on say poverty alleviation programs, unemployment benefits can be given, old age pension, so you know, social welfare schemes can be launched out. So all these social security benefits are examples of the welfare programs which can help in bridging the inequalities in the wealth and income between the people. Next question is, what is the impact of the following on credit multiplier and money supply if commercial banks keep less reserves, if they keep excess reserves? So the question has two parts. Two into two parts, I would say. One is you have to specify the impact on credit multiplier, one effect on money supply. Secondly, two situations mein aapko batana hai. One is when the commercial banks are keeping less reserve. Second, when they are keeping more reserves. So what is the formula of credit multiplier? If we recall, you can see on the screen, it is 1 by required reserve ratio. So if the commercial banks are keeping lesser reserves, if they are keeping lesser reserves with themselves, they can extend more credit to the public, hence the credit multiplier increases. If multiplier increases, the amount of money supply in the economy also increases because वो ज़्यादा credit extend कर रहे हैं, hence money supply increases. Similarly, if they keep excess reserve, you know, they are very protectionist, they are not liberal in extending credit. In that case, the multiplier will fall down and also the money supply will fall down, will decrease. Clear? Next question देखो, the Heckscher-Ohlin theory of foreign trade can be stated in the form of two theorems. Explain those briefly. So two theorems, it can be stated in two forms. One is Heckscher-Ohlin theory of trade. Second is Heckscher-Ohlin factor equalization theory, factor price equalization theorem. In the first one, it says that the factors of productions can be traded, just like you can trade goods and services. Similarly, हम लोग factors of production का भी trade कर सकते हैं because of factor endowment, that is the availability of resources in a particular nation. A nation will produce those goods and services in which it is abundant, and it will produce those goods and services in which the factors of production are abundant with the country, and it will export those and import those goods and services जिसका उनके पास factors of production are scarce. Similarly, for factor price equalization theorem, since in the Heckscher-Ohlin theorem it is stated that product mobility is equal to factor mobility, or we can say product mobility can be substituted by factor mobility. Because of this, the prices of factors and factors of production between two nations will be equalized. Okay? The prices of factors of production between two nations will be equalized because of the factor that the factors of production can be traded between two nations. Clear? I'll try to make a separate video on this Heckscher-Ohlin theory of trade because काफ़ी students के दिमाग में इसको लेके confusion होता है कि किस तरह से factor prices will be equalized. So I'll try to make a video on future. I don't remember if it is covered in the marathon video or not, the detailed explanation. If yes, you can just go and give it a watch. If not, then wait for the next video. अभी हम लोग इतना ही discuss करेंगे. Next, Lemon's problem is an important source of market failure. How? What is Lemon's problem? It is associated with asymmetric information between the buyers and the sellers. That means the buyers and the sellers are not having information, equal information relating to the goods and services. So what happens? This is a common problem. The Lemon's problem is a common problem in the market of used cars. If you remember, in the market of used cars, अगर seller के पास proper correct information है with regard to the used car कि उसकी quality कैसी है, कितने time use हुआ, but the buyer is not having the correct information, what will happen? It will result in asymmetric information, and it might happen that poor quality cars are there in the market. That means all the buyers are wanting to buy the poor quality cars because उसका price कम है, और sellers ऐसा बता रहे हैं कि इसकी quality बहुत अच्छी है, although price कम है, quality बहुत अच्छी है. So since they are reasonable, लोग poor quality cars खरीदने लग जाते हैं, and soon the market is flooded with these so-called lemons, and good quality products are driven out of the market. So this is a cause of market failure. Clear? Next question is compute M3 from the following data. What data we are having?
currency with the public. So M3 क्या होता है? M3 is actually known as the broad money. It is M1 plus the net time deposits with banks. ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो M1 को रेड में लिखा है बिकॉज स्टूडेंट्स को लगता है M3 है तो इट इज M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स, बट वो करने से पूरा गड़बड़ हो जाएगा. M1 क्या होता है? M1 इज करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद द RBI, राइट. सो यहाँ पे हम लोग करेंसी विद पब्लिक को ऐड करेंगे. For computing M3, we'll add the demand deposits with bank. We will also add the time deposits with bank because net time deposits with bank have to be included. Post office saving deposit का कुछ नहीं करेंगे. This is a danger. बिकॉज M2 में इसको कंसिडर करते हैं बट M3 में M2 को नहीं कंसिडर करते. वी टेक M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट. सो दिस इज नॉट टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एट ऑल. नेक्स्ट, अदर डिपॉजिट्स विद RBI. इट इज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट डिपॉजिट्स. इफ यू रिमेंबर, अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI के अंदर गवर्नमेंट डिपॉजिट्स आर एक्सक्लूडेड. ठीक है, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे. अगेन वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर पोस्ट ऑफिस NSC, इसको कंसिडर ही नहीं करना है. एंड सिंस हियर गवर्नमेंट डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड, इसको हम लोग यहां से लेस कर देंगे. गवर्नमेंट डिपॉजिट्स विद RBI आर टू बी डिडक्टेड बिकॉज अदर डिपॉजिट्स डू नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट डिपॉजिट्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड एग्जाम्पल. यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है. ठीक है, दिस विल एक्चुअली बी, जस्ट अ सेकेंड. Average propensity to save will actually be total savings upon total income. ठीक है, दिस इज रिटन बाय मिस्टेक. ये टोटल आपका सेविंग्स होगा. इसको आप एक एग्जाम्पल से समझा सकते हो कि टोटल इनकम अगर इतनी है, कंजम्पशन इज, से टोटल इनकम इज 1000, कंजम्पशन इज 500 और से 700. इसको अलग अलग लेवल्स पे लेंगे. अगर टोटल इनकम इंक्रीजेस टू 1200 तो कंजम्पशन थोड़ा और इंक्रीज होता है. हेंस वी कंप्यूट द सेविंग्स एंड देन वी टेक द टोटल ऑफ द इनकम एंड द टोटल ऑफ द सेविंग्स एंड वी डिवाइड टोटल सेविंग्स बाय टोटल इनकम. वी गेट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. Next question is explain the various types of externalities. So externalities are actually of 4 types. Positive externalities initiated in consumption which actually confer benefit to others. Positive externalities initiated in production. These are externalities which are initiated in the course of production which is conferring benefits to others. Negative externalities initiated in production. Externalities initiated because of the production process which is imposing an additional cost on third parties. And negative externalities initiated in consumption which is imposing additional cost to others. Clear? These can be received by third parties either in production or in consumption. Again, if you want detailed explanation, you can like a brief explanation, you can go and watch the marathon video. Which method is used in India for measurement of national income? Also state the method which is considered the most suitable for measurement of national income of developed economies. So in case of India, we do not use a single method for computation of national income. For example, if we take the agriculture sector, तो वहाँ पे net value added निकालने के लिए we use the production method. ठीक है, because it is less organized sector. Similarly, if we talk of the small sector, there we use the income method to calculate the net value added. If we talk of the construction sector, we use the expenditure method. So different methods are used, adopted sector wise. If we talk of developed economies, they use the income method for computation of national income because there the citizens are it is a high probability that the citizens are filing their income tax returns. Hence income ka data can be collected and NI can be calculated using that data. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया इस बार. फॉलोइंग एक्सचेंज रेट कोटेशंस आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट पीरियड्स. Spot exchange rate changes from ₹65 per dollar to ₹68 per dollar. The spot exchange rate changes from $0.0125 per rupee to $0.01625 per rupee. So the first question is identify the nature of quotations in 1 and 2 above.
So if we consider India as the home country and US as the foreign country, the first one is a direct quote, the second one is an indirect quote. Identify the base currency and counter currency in 1 and 2 above. So in case of 1, in case of the direct quote, the foreign currency is the base currency, that is rupee, और जिस currency में price expressed है उसको हम कहते हैं price currency या counter currency, which is rupee. Similarly in the second one उल्टा है, the base currency is rupee and the price currency is dollar, क्योंकि dollar के terms में price of rupee is being expressed. What are the possible consequences on exports and imports of 1 and 2 above? तो अगर spot exchange rate पहले 65 रुपीज पर डॉलर था, अभी 68 रुपीज पर डॉलर हो जाता है, यानी डॉलर क्या हो रहा है, डॉलर हो गया आपका महंगा. $1 खरीदने के लिए पहले 65 लगता था, अब 68 लगेगा. तो इंपोर्ट्स विल फॉल, एक्सपोर्ट्स विल राइज, क्योंकि फॉरेनर्स के लिए हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो चीपर हो जाएगी, हेंस एक्सपोर्ट्स विल राइज. सिमिलरली अगर स्पॉट रेट चेंजेस फ्रॉम 0.0125, ठीक है, टू 0.01625, in that case exports will fall and imports will rise because dollar has become cheaper here. Next question देखो, the deposit multiplier and the money multiplier though closely related are not identical. Deposit multiplier यानी कि credit multiplier हो गया, और money multiplier is the relationship between high powered money, that is the money stock, and the money supply. ठीक है, although these are related because RBI का जो decision है of the high powered money will affect the deposit multiplier or the credit expansion by the commercial banks, but they are not identical. Why? क्योंकि commercial banks अपना सारा पैसा let out नहीं करती. अगर सारा पैसा let out करती तो वो क्या हो जाता, मनी मल्टीप्लायर से बराबर हो जाता, बिकॉज उतना इंक्रीज मनी सप्लाई में भी होता जितना कि क्रेडिट में होता. बट दे आर नॉट लेंडिंग, दे डू नॉट लेंड ऑल द अवेलेबल मनी, दे कीप अमाउंट्स, दे कीप फंड्स विद देम इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस रिजर्व्स. सिमिलरली जो बोरोवर्स भी होते हैं ना, वो सारा पैसा आगे यूज नहीं करते इन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दे कीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ दैट मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश, दे डू नॉट यूज दैट एंटायर मनी, हेंस deposit multiplier and money multiplier are not identical. Next question, what is meant by the statutory liquidity ratio, in which forms this ratio is maintained? So SLR क्या होता है? It is a percentage specified by the RBI which the commercial banks, it is a percentage of the net demand and time liabilities of the commercial banks which they need to keep with themselves in the form of कैश, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट्स इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एटसेट्रा. ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्म में इसको रखना पड़ेगा, कैश, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट पेग एंड हार्ड पेग एक्सचेंज रेट पॉलिसी. सॉफ्ट पेग क्या होता है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है, यानी कि द एक्सचेंज रेट इज नॉर्मली डिटर्मिन्ड बाय द मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, उससे द एक्सचेंज रेट इज डिटर्मिन्ड. बट if it exceeds by a very high amount, or if it's less, if it's either short by a very high amount or excess by a very high amount, in that case the central government may intervene in order to stabilize the market. Similarly, if I talk of the hard peg policy, it is kind of fixed, very difficult to change. So it is a policy wherein the exchange rate is fixed by the central government, right? In which sectors foreign investment is prohibited in India? Very simple question, जैसे कि लॉटरी हो गया, गैम्बलिंग हो गया, चिट फंड्स हो गया, निधि कंपनी, ठीक है, फिर रियल एस्टेट हो गया, मतलब ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, या फिर वो सेक्टर्स जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज नॉट अलाउड, फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज एटसेट्रा. सो ऑल दीज आर सेक्टर्स वेयर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. So the next question is explain the market outcome of price ceiling through a diagram. So what is price ceiling? Price ceiling is a phenomenon adopted by the government, wherein the government fixes the maximum price for certain essential commodities or necessary commodities which can be charged by the supplier. ठीक है, तो ये diagrammatically देखो आप, ये demand curve है, supply curve है, ठीक है, this would have been the equilibrium price P1, but government will fix a price lower than the equilibrium price because ये necessity commodities हैं, अगर price excess होगा तो price कम fix कर दिया जाएगा. ठीक है, so P bar is the price seal that has been put. Now at this P bar you can see demand is say Q2 and supply is only Q1, so there is excess demand over supply. Now how this need would be met, how this excess demand would be met?
कई बार गवर्नमेंट के पास इसका बफर स्टॉक रहता है, सो गवर्नमेंट विल सप्लाई दीज कमोडिटीज एट lower prices. So this is the market outcome, that is the excess demand will arise, situation of excess demand, and it can be met by the government. The last question which is a choice for you, what is meant by countervailing duties? That means B का 2 में आप या तो price ceiling लिख सकते हो, countervailing duties लिख सकते हो. तो countervailing duties actually कब लगाई जाती है? जब एक्सपोर्टिंग कंट्री का जो गवर्नमेंट है, if it is providing subsidies to the exporters in order to export the commodities at a lower price, at artificially lower prices, then it will lead to trade distortion in the country which is importing it. So in order to offset the impact of the export subsidies being provided by the exporting government, the importing country can levy countervailing duties in order to offset this impact. So it is a tariff which is being imposed to nullify or offset the effect of subsidies being provided by the government to artificially reduce the prices in the importing country. Clear? So that is all with the discussion. If you have any queries, let me know in the comment section below. Again, I'm telling you, this is only a brief discussion of the paper. Concept मैंने कुछ नहीं समझाया यहाँ पे. If you want to revise the concepts, you can go and watch the marathon video. Also, if you haven't watched the discussion on auditing and assurance and you are going to appear for your group 2 examinations in Jan or May, do go and watch that video as well. Do let me know how you like the video, and अगर आपको पसंद आया तो hit the like button and share it with your friends. Thank you so much everyone for watching, and all the best for your examinations.